Next question is, if we have completed our schooling like 12th from an open school, can we still go for an interview of a cabin attendant or not? So yes, you can always go for an interview because that is equivalent to the normal school, जो regular schools होते हैं 12th जहाँ से लोग करते हैं, so that is equivalent to that. So you just need that certificate जिसमें ये mentioned होता है that this is equivalent to the other school, and you can show that and you can go for the walk-in interview or any other thing. After that, what are the basic interview questions? So basic interview questions, first top most important question is how would you introduce yourself, right? So you need to do that very well in a perfect manner. You need to explain your qualities very beautifully in front of the interviewer, and other than that, why do you want to join this particular airline? आप जो भी airline के interview के लिए गए हैं वो पूछेंगे आपसे कि आपको हमें क्यों join करना है, आपको हमारे साथ क्यों काम करना है. So you need to answer that very well. And other than that, like depends, कोई situation handling based question हो सकता है. They might raise a question that do you like working as a team or do you like working individually or independently? So you need to answer these kind of questions very smartly, because there are times when you have to take your independent decisions, but in the end of the day you are a team and you are working as a team on board. So आप उस हिसाब से उस चीज़ को आंसर करिए. Other than that, they might ask you for your strengths and your weaknesses, and also that if you are asked to relocate and if you are the only child of your parents, would you be able to do that? Because ये question से वो बहुत हद तक ये calculate कर लेते हैं, ये make out कर लेते हैं कि will this candidate be able to stay alone, और इतना करेज है या नहीं है. क्योंकि अगर आप अभी जॉब के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़कर बाहर नहीं जा पा रहे हो, देन हाउ वुड यू हैंडल एनी काइंड ऑफ चैलेंज और एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी ऑन बोर्ड. क्योंकि वो सिचुएशन जो होती है उस टाइम पे आपका दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर देता है, राइट? सो जब आपसे इतना सा क्वेश्चन पूछा गया तब आपने किस तरह से रिएक्ट किया, क्या आपने जवाब दिया, दैट मैटर्स अ लॉट. सो प्लीज़ कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. Then the next question is, do we need to relocate and can I become a cabin crew after working as a ground staff? या अगर ground staff की तरह work नहीं भी किया है तो किसी और firm में किसी और experience के बाद भी क्या हम cabin attendant बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? तो yes, you can go for the cabin crew interview और आप cabin attendant बन सकते हैं. और अगर आपने as a ground staff काम किया है, so that is a plus point for you, क्योंकि आप already same फील्ड में काम कर चुके हैं, दैट इज़ कस्टमर सर्विस बेस्ड फर्म. और कस्टमर सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपने जब काम किया है तो अगर आप सेम एयरलाइन में जाते हैं तो यू कैन गेट सिलेक्टेड थ्रू IJP. इन जॉब पोस्टिंग के थ्रू आप सिलेक्ट हो सकते हैं. और अगर आप स्विच करना चाहते हैं एयरलाइन, देन ऑल्सो इट इज़ अ बेनिफिट फॉर यू. बट डू वी नीड टू रीलोकेट? येस, यू हैव टू रीलोकेट, बिकॉज आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं या जो भी आपका होम टाउन है जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, यू कैन नॉट स्टे देयर, राइट? और स्पेशली इन द इनिशियल टाइम्स ऑफ योर फ्लाइंग यू कैन नॉट स्टे देयर, बिकॉज मे बी लेटर यू गेट द बेस लोकेशन विच इज़ नियर योर होम टाउन, और मे बी अगर आपका होम टाउन कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर बेस लोकेशन है ऑलरेडी, देन यू माइट start flying from your home. But there are very few people who are lucky enough who fly from their home staying with their parents. Otherwise you have to stay alone. या आप अपने कोई फ्रेंड्स के साथ में रूम शेयर करके रह सकते हैं, या मतलब इन द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टे विद योर फेलो क्रू मेम्बर्स और एनी अदर फ्रेंड्स इन PG हॉस्टल, और यू हैव टू ट्रैवल. कोई दूसरी सिटी में आपको जाकर ही रहना पड़ेगा क्योंकि बेस लोकेशंस बहुत कम जगह पर होते हैं एयरलाइंस के, राइट? दैट्स वाई. Then the next question is, what are the other languages that we should learn to get an advantage in the interview of cabin crew? अगर हम इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखते हैं तो वो हमको कौन सी सीखनी चाहिए, और अगर डोमेस्टिक सीखते हैं तो कौन सी सीखनी चाहिए? तो ऑब्वियसली लाइक लैंग्वेजेस लाइक मराठी, पंजाबी एंड गुजराती, these are the 3 languages that are still little easy to understand, right? But the languages like Bengali or Tamil or maybe Assami, these languages are little difficult to understand and little difficult to talk in. So ये सारी language आप सीख सकते हैं. अगर आपको कोई third language सीखना है, इनमें से you can try learning any of these languages. Other than that, if you want to learn any international language, then you can always
start learning Spanish, German or maybe French, because these are the 3 languages जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर बोलना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंटरनेशनल कैरियर्स में. So that would be an advantage for you. Other than that, yes, should we join cabin crew training institute or not? So as I told you earlier that it is not necessary that you join any aviation college or aviation training institute, but it totally depends on you and your skills and whatever aspect you need to work on yourself, right? But if you have this myth that they provide you 100% assurance for your placement, then it is not like that. They just provide 100% assistance for your placements. तो अगर आपका placement नहीं हो पाता है किसी भी reason की वजह से, तो you cannot claim या आप कुछ बोल नहीं सकते हैं institute को कि we didn't get selected for this interview or anything of that sort, because they only provide 100% assistance. जहाँ पर भी interview होगा they will inform you and you'll have to go there for the interview, or rest depends on you and your performance, that how you perform in your interview. उसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई जैक नहीं लगा सकते कि भाई ये हमारे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, हमारे इंस्टीट्यूट का कैंडिडेट है, so you need to select those candidates. It is not like that. So ऐसी कोई जॉब गारंटी नहीं है. It's just that they help you grooming yourself, brushing up your knowledge, and आपके interpersonal skills भी improve होते हैं, क्योंकि आप इतने लोगों के साथ में जो same environment में आगे जाकर रहने वाले हैं या same profession के लिए prepare कर रहे हैं, आप उन सब लोगों के साथ में जब daily basis पे रहते हैं तो थोड़ा आपके अंदर improvement होता है, and that is really very helpful. But in terms of job guarantee, there is no such job guarantee from any of the training institute for aviation or hospitality or travel management courses, right? And then can we join as a cabin attendant if we are not experienced in any field or any sector? So yes, you can always join and go for a walk-in interview even if you are just 12th pass. आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर 12th pass भी हैं तो भी आप जा सकते हैं. It's not mandatory that you need to have an experience of working somewhere in any kind of organization, right? So the next question is how to recognize a fake job vacancy. So I have already made a video for this. You can check in the description below. There is a link for this video also, and you can also click on the I button. You will find all my videos over there, also this one. But yes, as I'm answering all these questions here all together, that's why I will be answering this question also. It is like, first of all, you need to search for a job vacancy only on the official website of that particular airline. अगर आपको इंडिगो का देखना है तो आप इंडिगो के करियर ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाकर सर्च करिए. उसके अलावा आप कहीं पर भी अगर जाते हैं तो दैट माइट बी अ फेक जॉब वैकेंसी, राइट? सेकेंडली, अगर आपको यू माइट बी रिसीविंग सम मैसेजेस और ईमेल्स जो ऐसा हुआ कि योर जॉब प्रोफाइल हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर सो एंड सो जॉब, जैसे कि कैबिन क्रू के लिए या ग्राउंड स्टाफ के लिए, तो यू शुड थिंक ट्वाइस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ है तो यू मस्ट हैव अपलोडेड योर प्रोफाइल समवेयर. या तो अपने अपना अगर प्रोफाइल या अपना रिज्यूमे अगर आपने सेंड किया हुआ है ऑलरेडी एयरलाइन को, देन दैट माइट बी ऑथेंटिक और ओरिजिनल मैसेज. बट अगर वो चीज़ आपने नहीं की है, आपने कहीं अप्लाई नहीं किया है, आपने अपना रिज्यूमे कहीं मेल नहीं किया किसी भी एयरलाइन को, तो वो मैसेज कहाँ से आया, राइट? तो वो मैसेज फेक हो सकता है. उसके अलावा अगर आपने कहीं इंटरव्यू में गए नहीं, कुछ भी नहीं, और वो बोल रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड और आपकी इतनी इतनी सैलरी होगी, पर अभी क्योंकि आपको सारा आपका डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोसेस कंप्लीट करना है, यू हैव टू पे 10,000 फॉर दैट. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अनलेस एंड अनटिल यू गेट योर जॉब ऑफर लेटर इन योर हैंड, यू आर नेवर आस्क्ड बाय द एयरलाइंस टू पे अ सिंगल पेनी. आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू गेट योर जॉब ऑफर लेटर. जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा. आपका मेडिकल भी एयरलाइंस करवाते हैं. एयरलाइंस मेडिकल करवाने के बाद में whenever you are called for your training, then only you have to pay your training fees amount. Other than that आपको उसके पहले कुछ भी पे नहीं करना होता है, right? So keep all these things in mind. So be aware of all those fraud job vacancies and messages and emails. Other than that, do we have to oblige our seniors or anybody in aviation sector to get selected as a cabin crew or to be there in that particular organization or airline? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है.
I didn't know how to put it in front of all of you on this platform, but I thought that this is a very important question that people have been asking to me, especially the girls, because लड़कियों के घर पे, you know, their parents are very afraid of all these things, that if there is anything of that sort, then we don't want our daughters to get into such kind of profession, right? So that's why I thought I should clear this myth and I should clear this doubt कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई एयरलाइन नहीं है जहाँ पे you have to oblige someone to you know, just be there with the airline or anything of that sort, or just get selected in the interview or anything. So ऐसा कुछ भी नहीं होता है. Next question is, should we join the airlines or should we go for an interview of an airline when we are in the final year of our graduation? So see, अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड है तो यू कैन स्टिल थिंक कि हाँ आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप सपोज आपका जब तक सेमेस्टर एग्जाम आएगी टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर ट्रेनिंग वुड गेट कम्प्लीटेड, राइट? बट और अगर आपका ईयरली बेसिस पे है तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यू विल गेट मोर टाइम. तब तक आपका ऑलरेडी प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट हो चुका होगा, एंड देन यू विल गेट द लीव फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू कैन गो एंड गिव योर एग्जाम्स. फाइनल एग्जाम आप देके वापस आ सकते हो, तो वो कोई टेंशन नहीं है. बट इन प्रेजेंट सिनेरियो अभी के टाइम पे, लाइक फॉर गुड 6-7 months देयर वुड बी नो हायरिंग फ्रॉम एयरलाइंस. कोई जॉब वैकेंसीज नहीं होगी कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ के लिए. सो इन दैट केस शुड यू प्लान योर इंटरव्यू एंड ऑल दीज थिंग्स in the end of your semester or in the end of your last year of graduation? So I would say no, because आपका 3 months यानी कि 90 days का तो आपका ट्रेनिंग पीरियड ही होता है. एंड सपोज आपका एकदम एंड का टाइम बाकी है एंड योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड यू गॉट सिलेक्टेड in an airline, and वो उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग डेट फिर कब की मिलती है, दैट डिपेंड्स. लाइक इवन आई हैव वेटेड फॉर 1 month फॉर माई ज्वाइनिंग, एंड आफ्टर दैट 1 month 90 days का ट्रेनिंग के बाद में फिर आप फ्लाइंग स्टार्ट करते हो, एंड फॉर 6 months ऑफ पीरियड यू कैन नॉट टेक लीव, क्योंकि वो प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आप लीव नहीं ले सकते हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आई बिलीव दैट यू शुड नॉट यू नो, अगर आपका एंड है, फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर का एग्ज़ाम अगर आने वाला है, तो आप उस टाइम पर कोई भी इंटरव्यू मत दो, क्योंकि फालतू में आपका एक इंटरव्यू का जो चांस है वो लूज़ हो जाता है. सो दैट्स व्हाई प्लीज़ डोंट डू ऑल दीज थिंग्स. आप बेटर यू कंप्लीट योर एग्जाम्स, यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड देन यू गो फॉर द इंटरव्यू, ताकि आप फ्री माइंड से सिर्फ एक जगह फोकस कर सकें, राइट?